Hello everyone, welcome to PanaceaTutor. Today in this video, we are going to discuss about the most important and expected questions from People, Development and Environment section of Paper 1 UGC NET. जी हाँ, इस वीडियो में हम important questions discuss करेंगे related to People, Development and Environment section of Paper 1. इससे हमें ये अंदाजा मिलेगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किन सेक्शंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब पेपर में काफ़ी कम समय रह गया है। तो आइए देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और उन्हें अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है पॉल्यूशन से रिलेटेड। द क्वेश्चन सेज, इनसाइड रूरल होम्स द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन मे बी ऑप्शन ए unvented gas stoves, option B wood stoves, option C kerosene heaters. जी हाँ, तीन ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं एंड ऑल्सो कोड्स दिए गए हैं जिनमें से हमें एक करेक्ट आंसर चुनना है। कोड 1 says that the option is A and B only. Code 2 is B and C only. 3 is B only and 4th is A, B and C. जी हाँ, and the correct answer is 4th. Which is A, B and C. तीनों ही कारण हैं especially in rural homes as sources of nitrogen oxide pollution. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि assertion and reasoning पर बेस्ड है। इन क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली हमें बहुत डीपली एनालाइज करना होता है कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन की क्या डिमांड है और उसी अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में assertion says people population control measures do not necessarily help in checking environmental degradation. इसके पीछे रीजन दिया है the relationship between population growth and environmental degradation is rather complex. तो हमें ये देखना है कि क्या स्टेटमेंट A and B पहले तो ट्रू है कि नहीं या फिर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या करेक्ट रीजनिंग दी गई है फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हमें इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना है। अब हमारे सामने चार ऑप्शंस दी गई हैं जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। द फर्स्ट ऑप्शन सेज बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. 2 says both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third says A is true but R is false and fourth says A is false but R is true. इस तरीके के क्वेश्चंस UGC नेट पेपर 1 में बहुत सारे आते हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एनालाइज करके ही हमें करेक्ट आंसर देना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 व्हिच इज बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो एक पॉलिसी से रिलेटेड है। तो जनरली एनवायरनमेंट के सेक्शन में कई बार क्वेश्चंस किसी गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसी से भी आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स इन पर भी नज़र रखें ताकि अगर कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ नई पॉलिसीज आ रही हैं तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी हो। दिस क्वेश्चन स्टेट्स, एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2032. ऑप्शन 1 175 गीगावाट, ऑप्शन 2 200 गीगावाट, option 3 250 gigawatt, your option 4 350 gigawatt, and the correct answer is option 4 which is 350 gigawatt. अगला क्वेश्चन भी pollution से related है, specifically water pollution से related. The question says which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India. हमारे सामने चार ऑप्शंस दी गई हैं और हमें लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ढूंढना है। तो इसमें मेन वर्ड है लार्जेस्ट सोर्स। पहली ऑप्शन है अनट्रीटेड सीवेज वाटर, सेकंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, थर्ड अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फोर्थ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया इज 1, दैट इज अनट्रीटेड सीवेज। अगला क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एनवायरमेंट सेक्शन। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी एक्सटेंसिवली पढ़ना इस सेक्शन के लिए काफी जरूरी है। द क्वेश्चन सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय ऑप्शन 1 2022, ऑप्शन 2 2030, ऑप्शन 3 2040 और ऑप्शन 4 2050।
जी हाँ, and the correct answer जो कि आपको बहुत लोगों को पता होगा already is option 2, 2030. The Sustainable Development Goals, they have specific targets that need to be achieved by the year 2030. Next question is also an assertion and reasoning type of a question. Here the assertion says, conserving our soil resources is critical to human survival. और उसके पीछे reasoning दिया हुआ है, soil is home to many micro-organisms and contain minerals. तो हमें देखना है कि इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकती है. करेक्ट आंसर को चुनने के लिए हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं. ऑप्शन 1 says both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option 2, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Third, A is true but R is false. Or fourth, A is false and R is true. And the correct answer in this question is yes, option 2. Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. तो हमने deep analyze करके इस option को choose किया है that both A and R are individually true but R is not the correct reasoning or explanation of A. Hence the answer is option 2. Next is related to pollution and diseases. The question says, which of the following pollutants is the major cause of respiratory diseases? हमारे सामने 4 options हैं. Option 1, suspended fine particles. Option 2, nitrogen oxides. Option 3, carbon monoxide. And option 4, volatile organic compounds. Yes, and the correct answer is option 1, which is suspended fine particles, which is the major cause of respiratory disease, specifically in India. Next question is related to fuels of energy. The question says, among the following fuels of energy, which is the most environment friendly? And the options given are 1, ethanol, 2, biogas, 3, CNG, and 4, hydrogen. And the correct answer is 4th, hydrogen, which is the most environment friendly fuel for energy. Next question is related to renewable natural resources. And the question says, which of the following combinations represent renewable natural resources? And the options are number 1, oil, forests and tides. Option 2, fertile soil, fresh water and natural gas. Option 3, clean air, phosphates and biological diversity. Or option 4, fishes, fertile soil and fresh water. And the correct answer is option 4, which is fishes, fertile soil and fresh water. Next question is related to anthropogenic activities and their effects on environment. The question says, the factors which are most important in determining the impact of anthropogenic activities on environment are. तो हमें यहाँ पे correct factors identify करने हैं. Option 1 is population, forest cover and land available per person. Option 2 is population, affluence per person, land available per person. Option 3 is population, affluence per person and the technology used for exploiting resources. Or option D, which is atmospheric conditions, population and forest cover. And the correct answer here is option 3, which is population, affluence per person and the technology used for exploiting resources. Next question is related to air pollutants in urban areas which irritate eyes. The question says, identify the air pollutant in urban areas which irritates eyes and also respiratory tract of human beings. And the options are 1, particulate matter. Option 2, oxides of nitrogen. Option 3, surface ozone. And option 4, carbon monoxide. And the correct answer is option 3, surface ozone, which is the major air pollutant in urban areas which irritates eyes and also respiratory tracts of human beings. Next question is related to dominant source of pollution due to oxides of nitrogen. And the question says, the dominant source of pollution due to oxides of nitrogen in urban areas is 1, road transport, 2, commercial sector, 3, energy use in industry, or 4, power plants. And the correct answer in this question is road transport. Road transport is the dominant source of pollution due to oxides of nitrogen in urban areas. Next question is also assertion and reasoning kind of a question. Here the statement or the assertion given is, in urban areas,
Smog episodes occur frequently in winters, and reason given is in winters a lot of biomass is burnt by people for heating purposes or to keep themselves warm. So we need to analyze the question and then choose the correct option. Option 1 says both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option 2 says both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option 3 says A is true, but R is false. And option 4 says both A and R are false. And the correct answer is second, which is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Next question is related to pollutants which can cause cancer in human beings. The question says, which of the following pollutants can cause cancer in humans? Option 1, pesticides. Option 2, mercury. Option 3, lead. Or option 4, ozone. And the correct answer is 1, which is pesticides. This pollutant can cause cancer in human beings. Our next question is related to Earth Summit. The question says, which one of the following is the other name of Earth Summit? Option A, Geneva Summit. Option B, Brasilia Summit. Option C, Rio Summit. Or option D, World Summit. जी हाँ, and the correct answer is option C, Rio Summit. So we have discussed the important questions in this video, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप एग्जाम से पहले इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज कर सकें. एनवायरनमेंट के सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जनरली टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, causes of pollution, consequences of pollution, various natural hazards, various kinds of international summits based on environment, renewable and non-renewable resources of energy, Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं. तो इन क्वेश्चन से और इस वीडियो से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से इस सेक्शन की तैयारी करनी है, ताकि आप अपने UGC नेट पेपर 1 के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें. आई होप ये वीडियो आपकी पढ़ाई में मदद करेगी और आप इसी तरीके से जी जान लगाकर मेहनत करते रहेंगे. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू Panacea Tutor channel on YouTube and also like and share this video and hit the bell icon for further updates. आज की वीडियो में बस इतना ही. अपनी पेपर के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए. बी सेफ, हेल्दी एंड कीप वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल.